Assalamu alaikum all. Today we are covering another topic, that is vowels. This is pronounced as vowels, not vowel. This is pronounced as vowel. So it is a very short topic and today we are going to cover this topic. Okay, let's get started. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, and Y, Z. These are the 26 letters of alphabets, from which 5 are vowels and 21 are known as consonants. Here you can see the pink alphabets are known as the vowels. Here it is A, E, I, O, U. These are the alphabets known as vowels, but you have to pay your 100% concentration towards their phonics. Not A, E, I, O, U, but their phonics A, E, O, U. What are the phonics? I have given you the lecture in very starting days. Just pay your attention towards that lecture and again repeat the phonics of these words. Believe me, the phonics of these alphabets will help you a lot understanding the sound of vowels. वॉल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं. आगे सेंटेंस मेकिंग में सही वॉल्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर इतना ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हूँ और इसको इतनी डिटेल में समझाने के लिए आज आई हूँ. वॉवल्स के फोनिक्स के ऊपर, जो वॉवल्स हैं 5, उनके फोनिक्स के ऊपर आपको ग्रिप होना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि वॉवल्स वाले वर्ड्स को, वॉवल्स वाले वर्ड्स को हमने कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है. ठीक है, ओके. तो A, E, I, O, U, दीज आर द वॉवल्स एंड कन्फ्यूजन इज़ हमने इस पर एन लगाना है या अ लगाना है. तो अपनी कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दीजिए और जब भी कहीं भी आपको A, E, I, O, U वाले वर्ड्स नज़र आएंगे, जो वर्ड्स A, E, I, O, U से शुरू हो रहे होंगे, वहाँ पर आपने आंखें बंद करके एन लगाना है. अ वहाँ नहीं लगेगा, वहाँ एन लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, an apple, an egg, an igloo, an orange, an umbrella. अब आप इस पे गौर कीजिए. सारे के सारे वर्ड्स जितने भी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं और इन सब से पहले मैंने एन का इस्तेमाल किया है. अच्छा जी, तो अब बचा आ, और अ जो है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स के साथ इस्तेमाल होगा. जैसे कि टेक अ सिप, ही इज़ अ बॉय, I have a pen, I bring a cup of coffee. उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर और तमाम एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई हैं. Thanks for watching my channel. If you like the video, please like, subscribe and share it. Thank you. Bye bye.